Hello guys, here is d.nikita and good afternoon all of you. So I hope you all are well. So last class we were discussed about the last unit of company law, that is a winding up and a resolution. And so here is a new topic from the unit 1, NCLT and NCLAT and special code. So what is, before going to start, when we heard about the NCLT and NCLAT, what is that? What is the difference between them? Right. So NCLT is there is two types of tribunal courts, NCLT and tribunal. Where is the NCLT होता है आपका जहाँ पे आपके cases जो होते हैं related to a company law, properties and प्रॉपर्टीज रिलेटेड वेनेजुलाई और आपके रिलेटेड टू कंपनी थिंग्स डेटर क्रेडिटर्स राइट एक्सेट्रास एंड civil dispute types of cases, probate issues, family issues, divorce, juvenile, bankrupt, etc. Okay, so these types of cases comes under that. So NCLT is a National Company Law Tribunal, types of a tribunal, and to handle a corporate civil dispute related to rent and properties, juvenile, etc. types of cases related to company law and decide cases in accordance to principle of natural justice होता है. इसमें draw conclusion ड्राफ्ट किया जाता है for form of orders and not bound to strict judicial law एविडेंस प्रोसीजर. सो यहाँ पे इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. NCLT इज़ अ extended version of NCLT. NCLT is appellate tribunal. When the case is comes under the NCLT and after the conclusion and results, when a person is not satisfied with that, so he or she can further proceedings and further case transfer to NCLT appellate tribunal when he or she is not specified, right? Satisfied. So decision of tribunal, it form for currently and errors made by tribunal. जब उन्हें लगा कुछ errors है, कुछ omissions वगैरह by the tribunal हो गए हैं, challenge to Supreme Court and aggrieved or dissatisfied party by any order of tribunal may be applied. तो यहाँ पे apply कर सकते हैं भाई, है ना? Question in that question always comes from this unit, and that is a difference between these two, right? So jurisdiction क्या होते हैं यहाँ पे? Jurisdiction जो होती है यहाँ पे NCLT में primary है. Here is jurisdiction is overjudged by NCLT. So here is a cases under the insolvency, bankruptcy and corporate. But on the another side, NCLT case is when the cases of NCLT is not concluded and when party is dissatisfied, aggrieved, so that cases may be transferred to NCLAT appellate tribunal. And evidence is in the case of NCLT, evidence is accept and analyze the evidence from creditors from for taking decision से जो भी evidence होते हैं from creditors से show किए जाते देखे जाते हैं, and from another side accept analyze decision by NCLT and after the analysis fact. On the hands of NCLT, in the hands of NCLT, facts are collected, but on the another side, facts are analyzed. Constitution of NCLT, section 40. Constitution is the one president, right? President, judge of High Court, Supreme Court, at least 5 years, and judicial member होते हैं. Judicial member में at least 5 years, district judge of at least 5 years का रहा हो. High Court judge has at least 10 years of advocate होना चाहिए कोर्ट का, जुडिशियल ऑफिस और मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल. एंड टेक्निकल मेंबर 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को. इंडियन कॉर्पोरेट लॉ, साइंस, यूनियन लीगल सर्विसेज 3 years एज अ जॉइंट सेक्रेटरी रहा हो और अबव, या और एटलीस्ट आप OCR और प्रैक्टिशियन चाहिए हो एटलीस्ट 15 years के लिए. कॉस्ट अकाउंटेंट हो एटलीस्ट 15 years एंड CS एटलीस्ट 15 years. एंड any person other than this, any person who have proven ability, integrity, standing, special knowledge, experience not less than 15 years in the field of law, industrial finance, industrial management, industrial reconstruction, investment, accountancy, labor matters, other disciplinary
related management, conduct of affairs, and rehabilitation, winding ups of the company. Or next is has been 65 years of presiding officer labor court tribunal. 65 years का बंदा हो और इसको एक्सपीरियंस हो लेबर ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन, dispute settlement act 1947, right? So the National Company Law Tribunal NCLT is a president, such a member of judicial, technical member, जो भी member judicial के technical member है, not exceeding 62 years से ज़्यादा की एज का नहीं होना चाहिए. CG deems to be fit, he should be deemed to be fitter, and to be hold office for the period of tenure of 5 years from the date of entry upon the office and eligible for reappointed after the expiry of a period, right? So इसे बार रिवाइज करते हैं कि what is the constitution of NCLT as per section 408. President, Judge, High Court, Supreme Court, Judicial Member. He or she is Judge of High Court and at least District Judge at least 5 years, and Advocate, Technical Member and Technical Member. He has been a practitioner CA for 15 years and at least 15 years of a member of Indian Corporate Law Science, Indian Legal Service, out of which at least 3 joint secretary above, and 15 years experience as a cost accountant and a CS, and has also a knowledge about the person of proven ability, integrity, standing, special knowledge, experience, at least 15 years in the field of industrial finance, industrial management, industrial reconstruction, investment, accountancy, labor matters, etc. And also be a criteria of 65 years of age presiding the officer labor court tribunal in the dispute act 1947, and the person who has been all these conditions fulfilled, so not exceeding the year, the criteria of age 62 years, and CG deems to be fit, hold office for the tenure of 5 years, and also be eligible for the next tenure. Constitution of NCLT constitution है, chairperson shall be a chairperson आपका बंदा होना चाहिए CGI of a high court, so चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए आपका हाई कोर्ट से. जुडिशियल मेंबर्स में इसमें आएंगे आपके जज ऑफ हाई कोर्ट, जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल 5 साल के लिए होना चाहिए. टेक्निकल मेंबर के लिए के पास हैविंग अ नॉलेज ऑफ एबिलिटी, integrity, standing, having special knowledge, experience, and not less than 25 years of age in the field and the law of industrial finance, management, administration, industrial reconstruction, investment, accountancy, labor matter, other discipline related to management, conduct of affairs, rivalry, relation, winding up of a company. The next question is advantage of NCLT and NCLT. Advantage जो NCLT केसेस जाएंगे वो माइनर केसेस होंगे, जो ब्लंडर्ड केसेस होंगे NCLT में चले जाएंगे, राइट. एंड NCLT मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस होती हैं. यहाँ पे काफ़ी लिटिगेशन बिफोर डिफरेंट फॉर्म से जो आती हैं से पहले जो आती हैं. NCLT कंसिस्ट करता है जुडिशियल टेक्निकल मेंबर जो कि उस साइड भी होते हैं आपके ऑन अदर साइड. एंड वाइंडिंग अप्स का पहले क्राइटेरिया था 25 ईयर्स में, जो कि आप हो गया आपका 2 ईयर्स के लिए. स्पीड डिस्पोजेबल हो जाता है कि आपके केस का सॉल्व आउट नहीं है. देन यू कैन further transfer the case of NCLT Appellate Tribunal, and NCLT or NCLT have an exclusive jurisdiction, either this or that, right? And there will be a mixture of judicial. So have a mixture of judicial होता है, equitable judicial while deciding matter. And tribunal shall comprise of technical expert. Tribunal के पास सबके comprise होते हैं, इसमें expert होते हैं, will provide more than concrete and precise decision जो ले आपके. What is that? So advantage of NCLT, minor cases there, blunder cases appellate tribunal, and here is a NCLT is a multiplicity of litigation before the any forms of a court. And NCLT, either you can choose NCLT or a appellate tribunal, any one. And the process of the taken the cases and the proceedings and litigation is जो भी पहले होता था that the duration of a 20 to 25 year, but now is change, and that is the 22 years, and speedy disposable cases are here and reduce the number of cases. So the mixture of that is also equitable jurisdiction and deciding matters. Then next is judicial comprise जो होगा more concentrate and a precise decision. powers यहाँ पे होती है आपकी. powers of tribunal may be exercised and benches of powers होते हैं आपके पास ट्रिब्यूनल की, आउट ऑफ विच वन शैल बी जुडिशियल मेंबर एंड अदर शैल बी टेक्निकल मेंबर. उनमें से आपके एक जुडिशियल मेंबर के पास होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर के पास.
एंड में आफ्टर वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरेंस होती है यहाँ पे कि आप किसी बंदे रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, you have to provide a person to justify them, right? After that you can go to a conclusion and further findings and analysis of the fact. So according to the things to be fit, tribunal shall have a power of review. तो ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे पावर होती है कि रिव्यू द ऑल दीज थिंग्स एंड एनी पर्सन एग्री or dissatisfy the conclusion, so the party have a chance or have a right to further transfer the cases to appellate tribunal, right? And proceeding before the tribunal or appellate tribunal shall be deemed to be judicial proceeding only with the IPC. So before the going to be further proceeding, so it should be always be analyzed and mandated to judicial proceeding within the IP. जो पिटिशंस हैं, जो भी आप प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो जुडिशियल पिटिशन होनी चाहिए, वो भी थ्रू द IPC. नो सिविल कोर्ट शैल बी जुडिक्शन टू द एंटरटेन. तो पहली बात है, कोई भी कोर्स जो आपका कोर्ट है सिविल कोर्ट, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए मिलेगी. आपने कोई भी ऐसा केस हो गया, लाइक कोई भी माइनर सा केस या फिर कोई ऐसा केस जो एज पर सिविल डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी अननेसेसरी केसेस दे रहे हो, लाइक मेरे कुरकुरे के चिप्स में ये था या वो था, अननेसेसरी केसेस है, तो वो यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि देयर इज़ अ कोर्ट नॉट फॉर टेकिंग एनी एंटरटेनमेंट केसेस और एनी unnecessary cases here, which the tribunal of the appellate tribunal is empowered to determine that under this act no injunction shall be granted by any court. Next is other authority respect of any active pursuance of power conferred order this act. Where power of conversion is here, any person agree जो dissatisfy appeal में आपके further proceeding कर सकता है to the SC within 16 days. So अगर आप सर सुप्रीम कोर्ट में के पास आप जा सकते हो, आप पिटिशन डाल सकते हो, गुहार लगा सकते हो विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट टू हिम एनी एजुकेशन ऑफ लॉ आउट ऑफ डिसीजन ऑफ ऑर्डर. आप जब सेटिस्फाइड नहीं हो तो विदिन अ पर्टिकुलर टाइम विदिन 60 days यू कैन गो विद योर प्रोसीडिंग्स एंड वहाँ पे जाके अपनी पिटिशन रख सकते हो विद अ पर्टिकुलर टाइम टू SC. So that is NCLT. What is NCLT? NCLT and advantages, authority, powers, etc. So I hope you all understand what is that. So if you have any query, ask in the comment section. And if you like this video, please hit the bell icon for never miss an update. मिलते हैं next class में with d.nikita. Bye bye. See you soon.